कोई नहीं आने वाला है. Right. बट यस गाना डेफिनेटली वायरल हो गया था. द डे आई रियलाइज परसों नरसों वर्ली नाका सीलिंग से मैं बाहर निकल रहा था. आई वाज जस्ट अमेज्ड. उधर एक ट्रैफिक आइलैंड है, बच्चे लोगों को गाना लगा के दे वर प्रैक्टिसिंग द हुक स्टेप. सब लोग अपना काम तो हो ही गया है. मोमेंट द ग्राउंड लेवल टीम एंड द ऑडियंस एक्सेप्ट्स अ सॉन्ग होता है, एक फेज होता है. शायद ये एक फेज है जो कुछ वक्त के बाद हमें बहुत सरप्राइज करेगा. लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी when Rocky and Rani come out. I think that's a film that I'm looking forward to from the Hindi film industry. And I feel like as a film industry, we have to celebrate each other. I think ये बहुत हो गया दूसरों की फिल्मों के बारे में बात नहीं करना, दूसरों को प्रेज नहीं करना. I think हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक इंडस्ट्री हैं, एक साथ हैं. And I feel like जब सब फिल्में अच्छी जाएंगी तो everyone gets to make money and then we make more movies and we entertain you more. That's also the new age of actors that is there. Somebody's talking about insecurity earlier. I think that's gone. कावाला जब मैं शूट कर रही थी, जो तमिल वर्जन है, आई थिंक इट हैड जस्ट द बेस्ट टीम. देयर वाज नेल्सन सर जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, देयर इज जॉनी मास्टर हु इज द कोरियोग्राफर, एंड रजनी सर का होना तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैजिकल था ये गाना शूट करते वक्त. एंड हम जानते थे हम एक अच्छा गाना शूट कर रहे हैं, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज कि वैसे तो मतलब सब रील्स बनाते हैं, बट आई वाज लाइक मुझे रील बनानी है, एक रील बनानी है. एंड या जस्ट वेंट अहेड, मेड अ रील, एंड देन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इंस्टाग्राम पे. Next level. अभी मेरा नोटिफिकेशन बंद ही नहीं होता. बहुत सारे लोग remix reel that's going on my Instagram, and लोगों ने बहुत सराहा है इस गाने को. काफ़ी सारी बार हम फिल्मों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर. ये गाना हमें आप तक पहुँचा रहा है, और लिटरली लाइक वी आर ऑलमोस्ट लाइक वी हैव टू प्रमोट दिस सॉन्ग बिकॉज एवरीवन हैज लव्ड इट सो मच. एंड जेलर is a film that's very special to me because it's a very very rooted film, and I'm looking forward to actually interacting with the media on this. पहली बार मुंबई में कर रहे हैं तो would like to give it time to talk to everyone from the media. Absolutely, yeah. But I'm going to actually call somebody who's very excited also कि ये गाना इतना वायरल हो गया. So when you start to distribute a movie, also you have to realize कि भाई पब्लिक तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में. पिक्चर अच्छी हो जाए तो ठीक है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बट लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द सीईओ ऑफ यूएफओ डिस्ट्रीब्यूशन. पंकज जी, कैन वी प्लीज हैव यू हियर सर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. The question is that, I mean, initially it was told that film industry or any entertainment industry is male dominated. Do you think as of now the things are being changed? There is talk of women equality as such. So as of now, what is the situation in the entertainment industry when it comes to female actors as such? I feel today content is the most important aspect, and be it male or female. Like आज एक हीरोइन का पार्ट या आज ये गाना a guy can't do, right? Like you need a actress to do it. Nobody would watch it if it was being done like that. So everyone has their part. In fact ये फिल्म सबसे बड़ा सबूत है उस बात का. इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़ी स्टाइल पे बनाई गई है. रजनी सर हैं, मोहनलाल सर हैं, शिवराज सर हैं, रम्या कृष्णा मैम है, जग्गू दादा is there. I have a part to play. We are all playing parts in a movie, which is the vision of Nelson sir. So आज ऐसा दौर आ गया है कि nobody shying away from playing a part, because essentially जैसे कभी जब इंडिया मैच जीतती है तो कोई केयर नहीं करता कि किसने कितने रन बनाए. अच्छा लगता है जब सचिन 100 कमाता है, but it's always nice that इंडिया जीतती है. So for us a movie is like that. We want the film to do well, and when that does well, then everyone around it does well. So that's the point. Do you think South industry is ruling Indian cinema as of now? I think I can't talk about an industry overall because that's a very big thing to say. But I can tell you one thing, sir, that we've not made a pan-India film. We've made a rooted, true to its region, strong, big, massy entertainer with probably the biggest superstar the country has. And but we're not trying to make a pan-India film here. We're trying to make a film जो लोगों से जुड़े. एंड वापस से जब हम कावाला जैसा एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, ये हमारे लिए भी एक
एफर्मेशन बन जाता है कि जब वो सॉन्ग अच्छा हो, अच्छा ये तमिल सॉन्ग है जिसका टाइटल तेलुगु है, you know, so that's unique. You normally don't have a Tamil song with a Telugu title. And now we've come to the Hindi audiences because we feel like our content is strong, that it will travel across languages. उसको भाषा की ज़रूरत नहीं है. So I don't think it's one industry over another. It's only about when we are culturally so strong that whenever we take our culture and we celebrate it, वो automatically we are at least hoping कि पूरे देश तक पहुँचे. So यही हमारा प्रयास है. తమన్నా ఏం కావాలా? ఏం కావాలా? మీరు కావాలండి. మీలాంటి బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓ బాగుంది. ఓకే, యూ లవ్ డాన్సింగ్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ ఎగ్జుబరెంట్ డాన్సర్, యు నో వాట్ డాన్సింగ్ మీన్స్ టు యू? आई जस्ट नो वन थिंग कि कोई भी मैंने आज तक किसी को गुस्से में डांस करते हुए नहीं देखा. मतलब आपको खुश होना पड़ता है. इट्स लाइक अ गिवन कि अगर आपको डांस करना है तो आपको खुशी में करना पड़ेगा. So I've never seen a very angry person dancing or an upset. Have you seen an upset person dance ever? I've seen people struggling. When it comes to Hindi films, the moment the age gap is a bit large, like recently we saw in Tiku Bhai Sheru or with Salman Khan movies, usually there's a lot of chatter over it. When it comes to South movies, we don't see the same chatter, be it with Rajnikant, be it with Chiranjeevi. Now, this is not a personal thing. I just want to see about the fans. Is it because the South heroes are put on a pedestal and they are worshipped so much, so they are impervious to such criticism? No, I think all these really big superstars understand that they are actors first. And as an actor, your age doesn't matter. It's only in India we have this idea of age and actors being of a certain age. Internationally, I mean, nobody asks these questions because it doesn't matter. We are an actor. I am playing a character. Rajni sir is playing a character. He's a god. He's a demigod for like the entire nation. But he's still, everyone is playing a character. And I feel like we as performers value that over everything. So that is supreme. And you know what? I might be 60 and I might be still doing a song like this. And I think if a Tom Cruise can be on a do an action sequence at the age of 60, I want to do this song at 60 and I want to rock it even more. And I hope people go berserk way more than they have today. I'm sure That's you my will. quest. as an actor. One second. तमन्ना जी, जानना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप काम करती हैं, और वो भी जो लव वंस होते हैं, नियर डियर वंस होते हैं. विजय सर का क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है? बस यही, that's why माइक नहीं दिया था. It's called Google and Internet. Next, Vivek sir, नहीं. मैं ये कहना We'll jump on that. Vivek sir. कि